insertion after the given position. Say insert, there are many variants of this. Insert at say third position or nth position. Any nth position. First position insertion of a new node. Insert at second position, insert at third position, insert at fourth position, insert at fifth position. तो वैलिड पोजीशंस आपको वो देखनी है. तो वैलिड पोजीशन में देखो ध्यान से, बहुत से चेक लगेंगे. विल डिस्कस इट वन बाय वन. अर्लियर आई एम अज्यूमिंग I will just start from the first thing. Let us suppose that there are other various constraints can be. Let me just go through the constraint. Linked list ही empty है पहली बात तो. First constraint can be there. Second constraint can be insertion at beginning. N is 1. जब आपका n 1 है तो आपका start update होगा. नई नोड अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे डाल रही हूँ, कोई भी नई नोड, लेट अस उसके एड्रेस 1000 है, तो अगर मैं नई नोड फर्स्ट पोजीशन पे डाल रही हूँ, start will be updated in that case. If n is 1, you will have a special case. And if n is 5, you will have n is 2 or 3, that is a general case. N for general case. Now, one more thing can be added here. Let us suppose in this case n is nearly 4 and I want to insert n is equal to the 16th, जो existing करती position. And 5 can also be valid one. First, second, third, fourth, fifth. Fifth का मतलब I am doing insertion at the last. We'll have to check whether this will be covered in the general case also or not. But this thing is not valid. अगर आपकी position ही बहुत बड़ी है, सिर्फ 4 elements हैं, और you are saying insert at the 16th position. So you will have to consider all these constraints one by one within the code. जब भी आप coding करते हो, you will have to go for all these codes. Now how to start? I'm talking about first for general case, then I will keep on adding one by one. Insertion at nth position. तो आपको साथ साथ में, but let us suppose if I'm saying insertion of a new node at third position. So this is the third position. तो नई नोड सपोज करो उसका स्टार्टिंग एड्रेस 1000 है, उसमें कोई भी वैल्यू है, से वैल्यू इज 102. It has got null here. I have created that a temporary node, so you better know how to create temporary node. After in the third position, तो कुछ आपका लिंक ऐसा बनना चाहिए. That means n is 3 here. तो ये इंसर्शन करने के लिए आपको एक स्टेप पीछे रुकना पड़ेगा. That means I want to know the address of 8521. अगर मेरे पास 8521 का एड्रेस आ गया तो I can easily make the links as I did in the previous example also. That means अब अगर मैं काउंटर वेरिएबल ले लूँ, काउंटर इनिशियली टेम्परेरी पॉइंटर को भी एक पॉइंटर ले लो, उसको भी इंक्रीमेंट करो, और साथ में काउंटर वेरिएबल ले लो, उसको भी इंक्रीमेंट, जो भी काउंट रखेगा नंबर ऑफ कितनी कितनी नोड्स हम ट्रांवर्स कर चुके हैं. तो काउंटर आपका पॉइंटर आपका 3000 है. आई वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट थर्ड पोजीशन. तो आई वांट टू स्टॉप एट दिस पोजीशन ताकि मेरा लिंक बन सके. अगर मैं आगे निकल गई तो लिंक यहाँ नहीं बन पाएगा. 3000 counter is 1. Then I will increment 8 pointer to 8521. Counter is 2. That means I will have to stop at this position. क्यों स्टॉप करना है? You can better understand. अगर मेरे पास ये टेम्परेरी पॉइंटर है और ये मेरा P बन जाएगा, तो कैसे करना है उसमें? पहले इसके नेक्स्ट में I will make this as Q, new pointer, which is P का next, which is Q. Then I will say temp का next is equal to Q. P का next is equal to temp. This will give me the link. So I will have to go one step prior to. अगर थर्ड में इंसर्शन करनी है, सेकंड में रुक जाओ. अगर फोर्थ में इंसर्शन करनी है, थर्ड पे रुक जाओ. I have to stop till this node. So how to get it done? You will start with the temporary pointer. I'm just writing the crude code of that. You will take a pointer which will start from starting address, node asterisk pointer. Where you have to stop, you will be traversing this linked list. First issue is you should not reach till null. Null कब होगा? We will discuss that condition also. And I will take a counter which is initialized to 1. Integer counter variable, sorry, int counter. So counter less than equal to, let me check it out whether it is right or not, n minus 1. जब तक वो n minus 1 के बराबर है, अगर
n केवल 3 है तो सेकंड काउंटर पर आकर जाना, अदरवाइज कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग p is equal to p का नेक्स्ट. We can cross verify this code if there is any problem. Till this, what will happen? Say I want to insert at the n is equal to 3, where integer n which is given to me is 3 at the third position. The new node to be inserted is temp node. So I will be creating a temp node. Let us check first of all whether we have reached at p or not. P is initially 3000, counter is 1, done. P not equal to null, 3000 is not, counter is less than equal to n minus 2, that means counter is less than equal to 2. 1 is less than equal to 2, true. P is equal to p ka next and counter plus plus also. P will become equal to 8521, counter will become equal to 2, 2 less than equal to 2. तो ये एक स्टेप आगे चला जाएगा, तो you will have to make it n minus 2 in this case. Why is it so? When p is equal to 3000 and counter is equal to 1, 1 is less than equal to 2, 1 is less than equal to 1, it is true, right? P is equal to p का next, p will become equal to 8521, counter plus plus, counter बन जाएगा आपका 2. This 8521 is not equal to null, counter less than equal to n minus 2. 2 less than equal to 1 is false, बाहर आ जाएगा. P के अंदर हमारी वैल्यू ये रह जाएगी 8521. So you will have to traverse the counter till less than equal to n minus 2. If I'm assuming my n is genuine one, with this assumption, I got the value of p from here. So how to get q? Just like q, how to, you can take a temporary pointer to allocate a node. I will take a new node, node asterisk temp is equal to new node, which I want to add at the nth position. Temp के डाटा में जो भी मुझे वैल्यू डालनी है, I can insert that value, and temp का next मैं अभी कर दूंगी null. This is the creation of a new node with some value and pointer as null. So how to get a q portion? Q is equal to p का next. I will take another pointer just for the avoiding shortcut. I got a p, I got a q value. Temp is a node to be inserted. So what I will do, now I can easily play with that. I will say p ka next is equal to temp, and temp ka next is equal to q. In this way, we can insert a new node at the nth position. अब इसमें जो अभी add on चीजें हैं, देखो क्या चल रही हैं. Add on में first add on, I will start with keep on adding new element in this. Linked list is empty. So very first thing, if start is equal to null, तो no, you can't do anything. तो return यहाँ पर भी return कर सकते हो, ऊपर भी return null. तो you can say see out, insertion is not possible. This linked list ही खाली है. If n is equal to 1, अगर first position पे insertion करनी है तो उसके लिए आपको special case लगाना पड़ेगा. जब n की value 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 minus 2. This will give me -1 here. तो काउंटर आपका 1 है, 1 is less than equal to -1. कंडीशन हो गई false. एक बार भी लूप के अंदर नहीं जाएगा. आपने नई नोड बनाई, q is equal to p का नेक्स्ट. p के अंदर आपका एक ही लिंक है, आपका p के अंदर स्टार्ट ही है अभी भी. This will become equal to p, this will become equal to q. Insertion will be done wrongly. यहाँ सेकेंड एलिमेंट पे इंसर्शन हो जाएगी उस केस में. So for that purpose, you will have to add a special case. You can add either upper end or at the lower end. आपकी choice है. अगर n 1 है तो आपको जो नई नोड जो भी आप बना रहे हो यहाँ पर आप लिख सकते हो if n is equal to 1, you can write wherever you want. If n is double equal to 1, what you will doing? Temp का next जो नई नोड बनी है that should act as a starting node. Temp का next is equal to start and start is equal to temp. So this will allow you to insert a new node at the beginning. कैसे हो रहा है इस एग्जांपल में? जो नई नोड इंसर्ट होगी that will be added in the first temp like this. तो जो नई नोड है temp नोड है, तो temp node should point to this one. That what is this thing? This is start. So temp का next is equal to start. I will get this answer as 3000 here.
and start should now become equal to temp. So this is the for logic for insertion of a new node when n is equal to 1. General case, it is working perfectly. Now I will go for that case where n is 5 in this example. If n is 5, n is here 5. 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 - 3 ये बन जाएगा, आपका चलेगा मैक्सिमम 3 तक चलना चाहिए काउंटर. काउंटर लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा. तो p की वैल्यू शुरू में 3000 है, काउंटर इज 1, then 8521 काउंटर इज 2, then 1024 काउंटर इज 3, then 3 लेस देन इक्वल टू 3 फिर से ट्रू है, 5063 बन जाएगा, काउंटर विल बिकम इक्वल टू 4, 4 लेस देन 3 विल बी फॉल्स, बाहर आ जाएगा. तो यू विल गेट दिस p वैल्यू एज 5063 इन दिस केस. p में 5063 आ गया है. जब आप कंडीशन फॉल्स होगी p के अंदर 5063 होगा, क्योंकि 4 लेस देन 3 फॉल्स हो जाएगा, p में उस टाइम में 5063 होगा. तो यू आर सेइंग q इज इक्वल टू, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू नोड, q इज इक्वल टू p का नेक्स्ट. तो q विल बिकम इक्वल टू नल. p का नेक्स्ट क्या है? नल है. टेम्परेरी इज द न्यू नोड. यू आर सेइंग p का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्परेरी नोड. टेम्परेरी नेक्स्ट का temp का next is equal to null. Last thing is, if I want to perform insertion of some 5 nodes है, मुझे 16th में insertion करना है. तो आपका काउंटर, जैसे इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो n is से 16, 16 - 2 is 14. तो आपका पहले 3000 हुआ, p 1 हुआ, 852 2 हुआ, 1024 हुआ, 3 हुआ, 5063 हुआ, 4 हुआ. उसके बाद में p बन गया आपका नल. p इक्वल p का नेक्स्ट, काउंटर प्लस प्लस, काउंटर हो गया आपका 5, ऊपर गए, p अब आपका नल हो गया, नल के कारण बाहर आ गया. तो here you will have to embed the check. If p is equal to null, insertion is not possible. That means your n is not valid one in that case, right? तो ये आपके checks हैं, कुछ आप